फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I am Suramya Kaushik. We have the latest report on Shreyas Iyer now. Shreyas Iyer is fit to play Ranji Trophy matches for Mumbai and especially the fixture against Tamil Nadu starting from March 2. The latest update is about Shreyas Iyer's fitness, and this report carries a lot of significance, especially after what Rohit Sharma said after winning the fourth test match against England, where he gave a clear message that how players who will be preferring the domestic cricket will be preferred more in the test format and in international matches. Earlier, Jay Shah had also said a few things about that, and now the report about Shreyas Iyer carries a lot of importance that why participation in Ranji Trophy matches is really very important. Well, let's hear it out from Soumya Kapoor and Animesh Nath and Bansal Shah. What are their thoughts about it? Soumya, first of all, you've been tracking Ranji Trophy quite a lot, and we have seen, how players have been, the players who were included in the squad of the Indian team for the matches against England in five-match Test series. How a few players were juggling between the two, but there's still few players who haven't preferred Ranji Trophy matches. As we are seeing. But we also heard what Rohit Sharma said, Jay Shah said. Do you think Shreyas Iyer's participation in Ranji Trophy match now has something to do with what Rohit and others said before this? See, as per the reports, he had some issues with the back spasms and all. So he is now fit to play. What I have read, and he has been included in the Ranji squad for the semi-final game against Tamil Nadu. So Mumbai just thrashed Baroda in the quarters. So it's a good move. It's a good decision from Shreyas Iyer, whatever it is. But it's a good move from Shreyas Iyer to play a very important game for Mumbai if they make it to the finals, and it's going to be great for him to regain that red ball form, to get into that groove. I just feel someone, अगर अगर ये सारी बातों को कंसिडर करके हम चलें, जो रोहित ने बोला, जो चेशा ने बोला, and if if players are taking Ranji Trophy now seriously, that is a good move. Finally impact तो हुआ है, but also he had some issues with the back. So दो जो एक रिलीज आया था जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तीन मैचेस के लिए, कुछ क्लैरिटी नहीं दिया था बीसीसीआई ने उस जो स्टेटमेंट दिया था उसके अंदर। सो क्यों नहीं थे श्रेयस अय्यर, उसका कुछ क्लैरिटी नहीं था उसमें। बट अगेन विद द रिपोर्ट्स, एज आई सेड, he had some issues with the back stiffness and everything. So yeah, if he's fit to play, that's great, and it's a good move from him to make a comeback and playing an important fixture for Mumbai. Yes, absolutely. Well, Bansal, we all heard those reports where it was mentioned that Shreyas Iyer complained of back pain after the second test match. But we really can't get away with the numbers that Shreyas Iyer had put on the scoreboard in the first two test matches, 35, 13, 27 and 29. These are just the scores that Iyer managed to make in the first two tests, and then he was dropped for all the three tests in the five-match test series. How important this Ranji Trophy match will be for him in order to get back into the Indian squad, Bansal? I think the numbers that you just mentioned, the way he played in the first two games against England, I think that is why it makes it more interesting. And I'm happier that he's playing Ranji Trophy games now, especially when there is so much of noise that players are not playing the domestic tournament. People like Jai Shah, Rahul Dravid, and Rohit Sharma are also making comments on it. So that is why I'm more happier that someone like Shreyas Iyer is taking the red ball format seriously. We see him as a very good batter in red ball format. Unfortunately, he was not able to perform the way we expected of him against England. But I hope he regains his form. He regains his touch in this series. In this semi-final match for Mumbai. So I'm really excited to see how he goes forward in this Ranji Trophy match. Well, absolutely. You mentioned the right thing, Bansal.
quite a few days, we read all those reports that how Dravid and Rohit Sharma emphasized, and they have put a lot of focus on players playing Ranji Trophy and how players should participate in domestic matches. Animesh, along with Shreyas Iyer, we are also reading the reports where it is mentioned that Washington Sundar will be released from the Indian squad and he will be available for selection for the semi-final to play from the Tamil Nadu side. How important do you think for players to participate in Ranji Trophy matches? ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और जो डिसीजन है वो सही लिया है मेरे हिसाब से। मुकेश कुमार ने भी अपने लिए रिलीज मांगा था, ये प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप स्क्वाड में आपको गेम मिल नहीं रहा, आप लगातार बेंच पे बैठे हुए हो, उससे भी कोई फायदा नहीं, उसके लिए उससे भी उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और रणजी का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फिर इतने बड़े जो मैचेस हैं या फाइनल हो रहा है या रणजी का कोई भी मैच हो, मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक किसी प्लेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट गेम होना चाहिए। और इंडिया गेम आपको अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप अगर रणजी जाकर खेल रहे हैं तो आपके लगातार कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन बना रहता है एज एन प्लेयर। और ये वॉशिंगटन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से स्क्वाड बन रही है वहाँ पर मेरे हिसाब से वॉशिंगटन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और उन्होंने रिलीज मांगा है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी अच्छा है और तमिलनाडु टीम के लिए भी अच्छा है कि एक ऑलराउंड प्लेयर उनके स्क्वाड में होगा, और इतने इंपॉर्टेंट मैच में जहाँ पर वो कहीं ना कहीं दिल्ली से मैच, मुंबई से मैच खेल रहे होंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे सामने अभी है रणजी ट्रॉफी 2023-24 के सेमीफाइनल मैच के लिए जो लिस्ट है, जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं मुंबई टीम की तरफ से। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे कैप्टन, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, दीज आर टू important names. Obviously all of the cricketers are equally important, but I'm just mentioning the names who have been in the Indian side on and off. Shardul Thakur is one name. Tanush Kotyan, he's been making the headlines with the innings that he played recently. And then we also have Mushir Khan. Soumya, ये एक टीम जो बनी है, मुंबई ने बनाई है. How do you find this team for the Ranji Trophy semi-final? Also, first I would love to know, how do you find this team, how well this team is. Other than that, then we'll talk about how important the inclusion of Shreyas Iyer and Prithvi Shaw and Shardul Thakur will be for the Mumbai team. It's a very balanced team, first of all rounders, bowlers, ऊपर batters, जो भी top order batters हैं, plus the thing is Shreyas Iyer just adds on to the strength. पृथ्वी शॉ अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, आज भी उन्होंने इस सेकंड इनिंग्स में भी 87 रन करे हैं अगेंस्ट बड़ौदा. मुशीर खान स्कोर्ड डबल 100 in the first innings. तुषार देशपांडे, तनुष कोटियान making noises with their bat now, a record partnership. So they are in a very good space. जहाँ तक बैटिंग की बात है, ऑलमोस्ट 650 रन लगाए उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बड़ौदा के अगेंस्ट, प्लस दे गॉट द फर्स्ट इनिंग्स लीड एज वेल. सो a very balanced side. I would just like to go back to Washington Sundar. Washington hasn't been released as far as official statement is concerned, because the semi-final starts on second. Yeah. And if it goes till the fifth day, it will end just before the first day of the India England Test match. So 6 तारीख तक मैच जरूर खत्म हो जाएगा at maximum. 7 से इंडिया का टेस्ट कैन रीजॉइन द स्क्वाड. इट इज जस्ट दैट, जो हम आकाशदीप के बारे में बात कर रहे थे या मुकेश कुमार के बारे में पहले बात कर रहे थे कि बॉस आपने रणजी ट्रॉफी खिलाया, फिर आपने अगली फ्लाइट बुला के उन्हें उस धर्मशाला वापस बुला लिया, वो थोड़ा एक हेक्टिक जरूर होगा. एंड आई जस्ट फील ये सारा सिनेरियो से आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग दिस कि शायद वॉशी इज नॉट इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स फॉर द नेक्स्ट गेम एज वेल इन द 11 एज फार एज द 11 इज कंसर्न, क्योंकि शायद, बट इस टीम के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते. शाम को बुला के सुबह खिला भी सकते हैं. Not an issue. अगर if he performs, if he's in that groove, that would be great. I just want him to pick wickets, score some runs, be there in form, क्योंकि गेम टाइम, एज अनिमेश मेंशन, गेम टाइम नहीं मिला है, तो गेम टाइम मिलेगा. एक अच्छा मूव है तमिलनाडु की तरफ से भी और वॉशी की तरफ से भी. एंड as I said, if he plays the fifth game, it would be great. So yeah, I mean, it's a good decision from him as far as Mumbai is concerned. Very balanced side. I'm looking forward to. Obviously, I'm just looking forward to Ajinkya Rahane. Ajinkya hasn't had a great Ranji Trophy season. He has 2 or 3 ducks to his name. Hasn't been scoring runs. I just want him to score big one, big match, score big one, stamp your authority again, lead the side to the final. Hopefully, that's what my concern is. Else, आप सिर्फ नाम पढ़ते जाइए और आपको दिखेगा कि कैसे कितना बैलेंस्ड है वो स्क्वाड. इट्स नॉट दैट कि तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु भी उतना ही बैलेंस है, बट मुंबई का इस समय जो स्क्वाड है, इट्स जस्ट ग्रेट.
सौम्य, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अजिंक्य रहाणे का फॉर्म नहीं है और उनके डक्स आ ही रहे थे, उसमें श्रेयस अय्यर के भी डक्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि उनके भी 10 इनिंग में तीन डक्स है। ये जरूर है, लेकिन 48 में 48 भी करा था जो उन्होंने सिंगल एक मैच खेला है आंध्रा के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में। राइट। बिल्कुल। अय्यर अच्छा, को जिस तरह के बैक स्पाज्म की शिकायत रहती है, ऐसा ना हो कि मुंबई की टीम को सार्केज्म की शिकायत हो जाए। नहीं देखिए, वहां पे जिस तरीके के बैटर्स हैं, और मैं आज स्कोर कार्ड ही डिस्कस कर रहा था बंसल से। सो एक एक इनिंग में किसी ने ओपन करा है, दूसरे में किसी और, पृथ्वी Yes. शॉ ओपन इन द फर्स्ट इनिंग्स, हार्दिक तमोरे yeah. ओपन इन द सेकंड In इनिंग्स, the ही second स्कोर्ड innings. 100। तो पृथ्वी शॉ मिडिल ऑर्डर में भी 87 रन कर रहे हैं, मुशीर खान 4 नंबर खेल के 5 नंबर 4 नंबर खेल के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां डबल सेंचुरी कर रहे हैं। तो ये अगर कुछ ऐसा होता भी है बैक स्पैज्म का, तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं मुंबई को। ओके, यहाँ पर हमने बात तो कर ली है मुंबई टीम की एट लेंथ, बट बंसल, आई रियली कांट मिस वन टॉपिक दैट्स बीन ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, एंड आई थिंक यू माइट हैव गेस्ड इट बाय नाउ बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोइंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ अ सर्टेन प्लेयर who's been missing from the cricket circuit. Well, obviously, after what Rohit Sharma said after the fourth test match, everybody is looking for Ishan Kishan. Ishan Kishan last played cricket in a home series against Australia last year, and he's been missing from the cricket circuit. Do you think He was that not missing. He was just before we move to Vansal, he was not missing. I was having all the updates on him. I was after every round of Ranji season, Ranji Trophy, I was making calls to Jharkhand cricket, and I was getting the update. And the only update I used to get was, no boss, no update. He's not playing. Well, obviously, right now, Soumya, I was just reading a few reports, and only thing that I could read over there was just this, that Ishan Kishan hasn't communicated anything to Jharkhand Cricket Association as well. Bansal, Reports after पढ़ने की that, जरूरत नहीं थी. You could have asked me directly. no, I know that this has been going around and Yeah, around, but yes, one thing yeah, that Bansal. we know, Bansal, is that he's been missing from all sorts of He, cricket. Not he only has one been format. missing from action, but I think it was yesterday or today itself that he has returned to action in Today, the today, Patil today. tournament, Hmm. where Hardik Pandya is also playing in Yeah. Mumbai. So I think at this point in time, he's prioritizing white ball cricket over red ball cricket, considering the But no, way he's Bansal, going I have a forward. question. No, I know Mhm. where you're coming from, and I know that he's been seen now. What my Yes. question was that right after the fourth test, do you think Rohit Sharma's comment for cricketers like Ishan Kishan that you really need to show up in some format or the other, you really need to play some matches or the other in some capacity? Do you think that his comment somewhere or the other directed to the players who weren't playing in any domestic matches? I think it's hard to say what if it was directed to some specific player. When Rohit Sharma made that comment, he said that players who will show hunger will only be staying with the Red Ball team, with the Test squad. But I don't think it was specifically directed towards Ishan Kishan or any specific player. I think it was a very general statement that he was trying to make, and I think he was just willing that the players show that kind of intent that is required for Red Ball cricket. Obviously, we see many players. Interested in playing the IPL, T20s, and all those things because it is quite easier and more lucrative as well. But and Rohit himself said that red ball format, the test format, is quite difficult Yep. to play and to sustain over for a long period of time. So I think it was a very general statement. And even when Jai Shah made that statement in Rajkot, he was asked if the statements were directed against Ishan Kishan, but he made it very clear that Ishan is still a lot younger. It's not directed at any specific player, especially someone as young as Ishan Kishan. It is for all the players. It is for all the players who are in and around the Indian national sports circuit. So I don't think Rohit had any those kind of intentions to um, tell to Ishan Kishan. I think he can just make a phone call to Ishan Kishan if he is willing to tell him something specific. So Well, that's absolutely right because whenever any senior player, or for that matter, the captain or coach काश makes a इंडियन statement, क्रिकेट इतना हंकी डोरी होता.
it becomes easy for everyone to, be specific about the players. However, it might have been a generic statement for all the players. Animesh, if we talk about, Ranji Trophy matches, or for that matter, domestic matches, I want to know from you, क्योंकि अभी ये ज़्यादा चर्चा चलने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया और ईशान किशन भी नहीं नजर आ रहे थे फॉर्मेट में, तो ये डिस्कशन और ज्यादा बढ़ने लगा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर प्लेयर्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, how important it is for players to be in Ranji Trophy matches. Do you think that good performance in Ranji Trophy matches, or for that matter any domestic match, should be one of the criteria to be in the Indian team? बिल्कुल, अभी तो ये स्टेटमेंट आया है, इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन इम्पोर्टेंट तो हमेशा से था। जो अब इंडियन स्क्वाड में कहीं न कहीं जो प्लेयर्स कई सारे आ जाते हैं और उनके वो बैलेंस नहीं ढूँढ पाते मेरे हिसाब से, और पैप कल्चर ज़्यादा चल गया है, तो पैप और इंटरनेशनल मैचेस के अलावा कहीं न कहीं वो बीच में जो बैलेंस है वो कहीं न कहीं गायब हो जाता है, और बहुत सारे प्लेयर्स इनका शिकार हुए हैं, और वो परफॉर्मेंस पे भी दिखने लगता है। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती, आपको लगातार एड्स मिलते रहते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से जो एक लाइमलाइट मिल जाती है, उस वजह से कहीं न कहीं जो एक मनी ड्रिवन पूरा सिस्टम दिखने लगता है। वहाँ पर आप रणजी को कहीं न कहीं तरजीह नहीं देना चाहते। रणजी हो या किसी भी तरीके का डोमेस्टिक क्रिकेट हो, और वो कहीं न कहीं एक एरोगेंस मुझे लगता है। ठीक है, डिसीजन हो सकता है, पर एज एन एक्सपर्ट मुझे वो एक एरोगेंस लगता है कि आप डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहते जब आपके पास से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ठीक है, आईपीएल जैसे नए प्लेटफॉर्म, आईपीएल जैसे मतलब अब तो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म हो गया, और कई सारे प्लेटफॉर्म शुरू, जैसे आईएसपीएल शुरू हो रहा है, बहुत सारे छोटे बच्चों को भी पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स ये हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जिनको कभी मौका नहीं मिल पाता, वो इस चीज से एक अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, और आगे के लिए उनका करियर अच्छे से बन सकता है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं एक मनी ड्रिवन भी हो जाता है। एक आपका जो गोल होना चाहिए, गोल से आप मिस आउट करने लगते हैं, और वो मुझे लगता है ईशान किशन के साथ हुआ। आप अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आप सामने आके बोल दीजिए। आप फ्रेंचाइजी, मुझे ये फ्रेंचाइजी के साथ प्रैक्टिस करने वाला आइडिया ही नहीं समझ में आता है। आप फ्रेंचाइजी, आपकी प्रायोरिटी अगर फ्रेंचाइजी है तो आप खुल के खेलिए। आप इंडियन स्क्वाड में और भी सारे प्लेयर्स हैं जिनको जगह मिलती रहेगी, वो आके अपने लिए जगह बनाते रहेंगे। आप इंडियन स्क्वाड के बारे में बात करना बंद कर दीजिए, वहां पर जगह खोजना बंद कर दीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंचाइजी के साथ और ख्वाब देखेंगे कि आपको स्क्वाड में खेलने का मौका मिले। मेरे हिसाब से गलत प्रैक्टिस है। एनसीए में जाके प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरह की प्रैक्टिस की जाती है, जो जहाँ पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह की इंजरी से जूझ रहे हैं, आप वहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो आप डोमेस्टिक खेलिए, स्टेट के लिए खेल रही है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं प्लेयर्स की चॉइस, जब आपका कद उतना बड़ा हो जाए तब आपको कहीं ना कहीं चूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं था ईशान किशन की तरफ से, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा कमेंट पास नहीं किया है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट को ही प्रेफर करना चाहते हैं रेड बॉल के ऊपर। उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट ऐसा नहीं आया, लेकिन अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो वो गलत है। कहीं ना कहीं हर फॉर्मेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, और वो कहीं ना कहीं हम एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। और इस आने वाले समय में मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो पैप कल्चर के साथ वो बिल्कुल मिसिंग हो गया। बिल्कुल। ऑल्सो अनिमेश, मैं यहाँ पर जो आपने बात कही ना, उसके साथ ही आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर टू एवरीवन who's watching the live and somewhere or the other reading reports about how Ranji Trophy matches should be prioritized, and how Shreyas Iyer will be playing Ranji Trophy match for Mumbai side, and whether Ishan Kishan should have played Ranji Trophy match or not. I want to make it clear कि ये सारे के सारे perceptions है सबकी तरफ से कि क्या करना चाहिए था ईशान किशन को, या उन्होंने क्या किया होगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ईशान किशन ने, जैसा अनिमेश ने भी कहा, कि ईशान किशन ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। और वहीं पर अगर आप इंडियन टीम को देखें तो इंडियन टीम ने भी ईशान किशन का नाम किसी स्पेसिफिक कमेंट में नहीं लिया है। इट्स जस्ट कि सब लोगों ने वो कमेंट को रिलेट किया है ईशान किशन। I'll just add one thing to that. I did a story for CricketNext where I had a chat with someone who is very closely associated. He told me that Ishan is taking a break from cricket for some time. It was not about red ball, it was not about white ball. He's just taking a bit of a break from cricket because he has been on the road for almost an year, not playing the games, and that has taken a bit, not taken a toll, but that has made him a bit होता ना कि थक गया है। Must have disturbed his mindset. Yeah, he just wanted to keep himself fresh, and उसके लिए उन्होंने क्रिकेट से ही ब्रेक लिया है, and he has been in touch with the management and everything. The moment he feels he want to get back to action, he will.
And there were reports earlier that while he was not a part of the Jharkhand side for the 7 games, he will he will probably make a comeback in the DY Patil tournament, and that happened. He made his comeback with the Yeah. DY Patil tournament. So yeah, so what you're saying is absolutely right, that there was no official comment from anyone, but people close to him told me that he was taking a break from cricket. So he was practicing, he was doing his fitness Was drills. training as well. Yeah, he was doing तो everything. हमें He was सवाल training. ये नहीं है फिटनेस ड्रिल्स कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, सवाल का जवाब क्या है? लेकिन फिटनेस ड्रिल्स किसके साथ कर रहे हैं? अनिमेश वहां पे क्रिकेट नहीं छोड़ा ना, क्रिकेट से ब्रेक ले लिया ना आपने। देखिए आप जब सवाल ब्रेक तो पे सवाल तो यही है ना, सवाल यही लाई करता है। इसी बीच में सवाल है कि जो आपका जो अगर यही टाइप जो मेंटल फैटिग अभी आ गया आपको इंडियन स्क्वाड में होते हुए आ गया था, यही मेंटल फैटिग आईपीएल के अराउंड आएगा आपको। लेकिन उसके दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर आपके पास कोई क्रिकेट ही नहीं है, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के बाद अगर आपके पास सीधा आईपीएल ही है, नो आई एम नॉट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर आपके पास इस टेस्ट सीरीज के बाद और साउथ अफ्रीका टूर के बाद सीधा आईपीएल ही खेलने को बचता है और उसके बाद आपके पास सीधा वर्ल्ड कप है, तो इसमें फिक्चर्स का इशू है ना, इसमें द इंडिविजुअल इज नॉट इंक्लूडेड। अब जो अभी वो डीवाई पाटिल भी तो खेल रहे हैं ना जाके। रणजी का कोई मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, रणजी खेलते तो हो सकता था, रणजी आगे हो सकता था, टेस्ट रणजी हो सकता था, अंडरस्टैंड, रणजी हो सकता था। आई एम नॉट सेइंग कि कंसीडर हिम फॉर द अपकमिंग जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से सीरीज होगा, आप उसमें उनको कंसीडर करिए बिना खेले, मेक हिम प्ले द नेक्स्ट सीजन, मेक हिम प्ले द नेक्स्ट सीजन। आई एम जस्ट सेइंग जो अभी 3 महीने में हुआ, क्यों करना चाहिए जब स्क्वाड में अवेलेबिलिटी नहीं अपनी शो मैं कर रहा है, वही कोई कम्युनिकेशन खुद की नहीं तरफ नहीं से मैं वही बोल रहा ऐसे हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। आप कंसिडर मत करो, आप वाइट रेड बॉल के लिए कंसिडर मत करो, मेक हिम प्ले द रणजी सीजन, आस्क हिम ब्रो बॉस इफ यू स्कोर some amount of runs in the Ranji season, then we'll pick you up, okay, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। Agree to what you're saying. I'm just saying when he was on the break, it was only Ranji Trophy that was going on, and it was only India versus England series that was going on. That's it. और साउथ अफ्रीका का टूर था। तो क्रिकेट से ब्रेक लेना, I can understand. Okay, yeah, that's a bit of a probably a decision that is not going in his way because वो totally action से out है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। You know, डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं एक प्लेयर टारगेट पे आ रहा है। And also, okay, I'll just add one thing. उसके बाद आप बोलो, अगर झारखंड सेमीफाइनल पहुंचा होता, still he would have preferred to play the DY Patil tournament, then I would have agreed to what you are saying कि बॉस अगर आप क्रिकेट में वापस आ रहे हो तो आप रणजी में चले जाओ, then I would have understood what you are saying. अभी उसके पास फिक्सचर ही नहीं बचा ना रणजी खेलने का। अभी मतलब आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ। मेंटल फैटिग का जो उन्होंने इशू दिया था वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, बीसीसीआई ने भी रिलीज किया था कि मेंटल फैटिग के चलते भी ईशान किशन ने रेस्ट मांगा है, ठीक है। अभी मैं मानता हूं कि अगर आईपीएल स्क्वाड में मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में है या किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे होते ए टू जेड, मैं उसका नाम कोई भी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं और उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, गेम टाइम नहीं मिल रहा, या फिर बैलेंस स्क्वाड जो प्लेइंग 11 है वो कहीं ना कहीं उनसे इतर बन रहा है, उनके इतर बनाया जा रहा है, तब क्या वो अपना मेंटल फैटिग का रास्ता देके वहां पर जा सकते हैं? मतलब जाएंगे क्या? वो लॉजिकल होगा? क्योंकि हो सकता है कि फिर अगले साल में आपको खरीदा ही ना जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ही ना हो, तब वहां पे आप वो रिस्क नहीं लोगे। तो ये दिखाता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। दैट शोज योर प्रायोरिटी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में वापस आना है, नहीं टेस्ट क्रिकेट की नहीं, टी20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना मैं। अगर आईपीएल चल रहा होता, आपको गेम टाइम नहीं मिल रहा होता, तब आप मेंटल फैटिग का ऑप्शन नहीं, मेंटल फैटिग का जो भी आप इशू लेकर आए थे वो सामने नहीं लेकर आते आईपीएल के टाइम पे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट जा सकता था और आपका अगले साल ऑक्शन में क्या पता आपको कोई खरीदता भी नहीं। लेकिन जिस फ्रेंचाइज के लिए वो खेल रहे हैं उसके साथ ये चीज है नहीं ना। इंडियन टीम के साथ वो प्रॉब्लम है, आपके पास वैकेंसी नहीं थी, व्हाइट बॉल में आपके पास वैकेंसी नहीं था, रेड बॉल में आपके पास अंडरस्टैंड एज आई सेड, आई एम नॉट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, बट आप फ्रंट लाइन कीपर लेके गए लेकिन आपने फिर भी उसे चांस नहीं दिया। खिलाते तो सही, फेल होने तो देते। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ध्रुव एंड प्रोबब्ली केएस भरत एंड सब। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप, मेरे हिसाब से आपको रेस्पेक्ट होना चाहिए, मेरा मानना अलग है, मैं इससे बिल्कुल नहीं, मतलब अपने एग्रीमेंट नहीं रखता हूं कि आप अगर इंडियन स्क्वाड के 15 में भी हो, आप वहां पे हो, तो आपको स्पॉट की इज्जत करनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से कोई बहाना, ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए। वो जो मेंटल फैटिग का इशू लेकर अगर आप बाहर जा रहे हो
मैं चाहता हूँ कि अगर आईपीएल में भी आपको इतना गेम टाइम मिले तब आप ये करके दिखाओ, तब तो मैं मानता हूँ कि आपको वो इशू है और आप उस चीज को लाइक करते हो, आप क्रिकेट से अपना ब्रेक लेना चाहते हो, पर वो आप नहीं करोगे, Okay. ये प्रायोरिटी होती। Okay. और आप वो 200 जो आप आप 200 अपनी के अनअवेलेबिलिटी, लेकिन आप ऑस्ट्रेलियन 200 के प्लेयर्स बाद अनअवेलेबिलिटी शो करते हैं जब उनकी अपने गेम्स के लिए प्रायोरिटी होती है, इंडियन गेम्स के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनअवेलेबल होते हैं, आप एसएस खेल रहे होते हो, वर्ल्ड कप खेल रहे होते हो, प्लेइंग 11 में लगातार जगह नहीं मिलती, लेकिन तब भी दिक्कत होती है ना। एक्चुअली दूसरी चीज, अनिमेश, या यहाँ पर मैं बंसल के पास मैं जाना बस चाहूंगी। एक चीज बंसल, ये मैं बंसल पे आता, लेकिन बंसल, इफ व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? यार आप 200 करते हो ओडीआई क्रिकेट में, आप उसके बाद भी ड्रॉप हो जाते हो, आपको कंसिस्टेंटली जगह ही नहीं मिल रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका जो फ्रंटलाइन कीपर है वो अभी आउट ऑफ कंटेंशन है। ऋषभ पंत ठीक है, व्हाइट बॉल में उतने ज्यादा नहीं कंसिस्टेंटली हमें दिखे, लेकिन दिखे तो है ना। जब आपके पास एक ऑप्शन है जो लड़का मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता है, आपके लिए उसने मैच बचा के दिया वर्ल्ड कप में, आपने उसने एक नॉक ऐसा खेला जहां उसने मैच बचाया, जब आपको जरूरत थी वो नीचे भी खेला, वो ऊपर भी खेला, उसने कीपिंग भी करी। एज आई बीन सेइंग, मैं साइड नहीं, मैं किसी तरफ नहीं हूँ, आई एग्री। अगर आपके को 3 मैच भी मिल रहा है ना रणजी खेलने का, तो खेलो, रणजी ट्रॉफी खेलो जितना खेल सकते हो, क्योंकि ये बार बार वापस नहीं है, बिकॉज यू आर एट अ लेवल जहां आप 300 रन बना सकते हो, ठीक है ना। और जिन ट्रैक्स पे वो मैचेस हुए हैं, जो झारखंड में आके भी 3-4 गेम खेले, वो तो खेल कूद होती है ईशान किशन के लिए। हैविंग सेड दैट, जब उस लड़के की परफॉर्मेंस के बाद जगह नहीं बन रही, दैट इज somehow frustrating, and if he's asked for it, it's okay, it's totally fine. I think you are right, and that might be the reason कि उनको इतना frustration क्यों हुआ है. As you said, he was playing well. He was playing well in Yeah. ODIs. He did well against West Indies in the Test match as well. He scored 150, if I'm not wrong. So उसके बाद अगर उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, तो frustration थोड़ा बहुत आना obvious है. Everyone is human at the end of the day, so थोड़ा बहुत obvious है. And if I try to be the devil's advocate here, तो if we see the fixtures that are coming at, IPL आ रहा है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, and I think he knew that he is not going to make it to the test squad, even against the even at Bangladesh, New home Zealand. against England. Yeah, even if he played the Ranji Trophy matches, he might not have been selected in the test squad. So I think his plan was to stay fit for the T20s. And now he's playing DY Patil so that he can Yeah. gain match time for the IPL and the T20 World Cup coming ahead. So I think Yeah, exactly na. But still, he must have shown his displeasure. I agree. He must have shown his displeasure with this, that, he won't be available or he wants a break or whatever. What is the point of discussion here? The point of discussion here is that how will you make your spot in the 11 back? Okay, and the whole discussion comes to a point कि अगर आपको वापस टीम में आना है तो आप कैसे आओगे? आपने अपना डिस्प्लेजर दिखा दिया, खत्म बात। अब आपको जब वापस आना है तो आपको खेल कर आना है। अगर उनकी प्रायोरिटी वाइट बॉल है तो ठीक है, वो डीवाई पाटिल खेल रहे हैं, ठीक है, वो exactly. शायद आईपीएल में रन्स बना लेंगे, और अगर वो सिलेक्ट होते हैं T20 वर्ल्ड कप में तो ठीक है, नहीं होते हैं सिलेक्ट तो भी उनको खेलना तो पड़ेगा। पॉइंट हियर इज फॉर ईशान किशन कि आपको कुछ ना कुछ तो खेलना पड़ेगा। एंड हियर आई विल गो बैक टू व्हाट द्रविड़ सेड कि आपको कुछ ना कुछ खेलना पड़ेगा, व्हिच मींस कि अगर आप टेस्ट में आना चाहते हैं, राहुल, when did the coach say this कि आपको कुछ ना कुछ खेलना पड़ेगा? जब रणजी ट्रॉफी के सारे फिक्चर्स हो गए, 2 राउंड बचे थे, जस्ट हियर मी आउट, जब 2 राउंड बचे थे, बीसीसीआई का मैंडेट सो कॉल्ड मैंडेट कब आया? जब 2 राउंड रह गए थे, तब आया ना। आप सीजन के स्टार्ट में बोलते थे ना कि बॉस, आप कितने भी बड़े प्लेयर होंगे, इफ यू आर ऑन अ ब्रेक, इफ यू आर नॉट इन द नेशनल टीम, you will have to play the Ranji Trophy to make it to the red ball team. That is it, khatam baat. If his priority is white ball, he's playing the DY Patil, he's eyeing IPL, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, उसके रणजी ट्रॉफी और टेस्ट क्रिकेट की बात तो बाद में होगी ना। जो नेक्स्ट फिक्चर्स है, जो इंडिया जो असाइनमेंट अब है, उसके हिसाब से तो ही इज गोइंग वेल ना, ही इज गोइंग सब बिल्कुल सही। See, there are two things. One thing is what Rahul Dravid said on 11th of January, on the day of India-Afghanistan T20 series. When he was asked about Ishan Kishan, Rahul Dravid said that he might have to play, or he will have to play Ranji Trophy matches, Exactly. and then,
make it to the test squad. So he gave a bit of a hint over there कि शायद उनको रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने पड़े. अब ये डिसीजन तो ईशान किशन पर था ना कि उन्हें खेलना था या नहीं खेलना था. Kishan made a decision for himself to not play Ranji Trophy matches, and that's why he was not there in the test squad. So what I'm trying to say is that more than anybody else, it was Ishan Kishan's choice. He made a choice of not playing Ranji Trophy matches. That's why he was not there in the test squad. That can be one scenario. I'm just talking about scenarios. ईशान किशन को लगा होगा कि दिस इज T20 वर्ल्ड कप ईयर एंड आई हैव टू प्रायोरिटाइज वाइट बॉल क्रिकेट. मुझे अब DY पाटिल खेलना है, तो ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर दैट, एंड देन ही माइट बी एबल टू परफॉर्म इन IPL. तो अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो T20 वर्ल्ड कप में होंगे. नहीं परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया, कोई और उनकी जगह पे होगा. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स हियर इज व्हाट ईशान किशन थॉट. एंड ऑब्वियसली मैंने पहले भी ये बात बोली कि ईशान किशन ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था, और इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से भी कहीं पे भी ईशान किशन का नाम स्पेसिफिकली नहीं यूज हुआ था. सो राइट नाउ व्हाट मैटर्स इज कि ईशान किशन ने क्या सोचा और वो क्या करना चाहते हैं. ओनली ही नोज, एंड मे बी team knows, maybe Rahul Dravid knows, maybe Rohit Sharma knows, अगर उनकी बात हुई होगी. Now point here, we'll go back to the initial point जहाँ से हमने शुरू किया था about Shreyas Iyer. जितना हम रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं जो सामने है कि श्रेयस अय्यर को शायद बैक पेन था, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं थे जो पहले भी 2 रणजी मैचेस हुए, और अब उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी सामने रखी एंड ही विल बी देयर फीचरिंग फॉर द मुंबई टीम अगेंस्ट तमिलनाडु. दैट्स द होल पॉइंट. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोर देन एनीबडी एल्स दोनों साइड्स ने अपना पॉइंट क्लियर रखा है. प्लेयर्स एज वेल बाय हैविंग देयर चॉइसेस क्लियर. मेरे पे काउंटर है. क्वार्टर फाइनल इज अ पार्ट ऑफ नॉकआउट्स. NCA से 100% फिटनेस अभी मिला श्रेयस अय्यर को. व्हाट इफ मुंबई सेमीफाइनल नहीं पहुंचती तो श्रेयस अय्यर इस साल रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक नहीं खेलता ना. वो भी नहीं खेलता. बिल्कुल. हाँ, झारखंड के पास फिक्सचर्स नहीं है, इसलिए ईशान किशन रेड बॉल नहीं खेल रहा है अब. सिंपल, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अभी अगर सेमीफाइनल से बाहर हो जाता है मुंबई तो श्रेयस अय्यर जस्ट प्लेड 2 मैचेस इन दिस होल रणजी ट्रॉफी. दैट इज इट. एक आंध्रा के अगेंस्ट वो थोड़ा, क्योंकि अपने को ग्रूव में लाना था, ही हैड नथिंग एट ऑल उस टाइम पे लाइंड अप, और वो एक इनिंग में 48 बॉल 48 करके खेल के गए, तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया था. सेकंड इज दिस गेम. इफ मुंबई डजंट मेक इट टू द फाइनल्स, देयर आर नो रेड बॉल फिक्सचर्स एनीमोर टिल द नेक्स्ट सीजन. और दिलीप ट्रॉफी आएगा वो ठीक है, वो दैट इज अ और दिलीप ट्रॉफी आई डोंट थिंक सो दिलीप ट्रॉफी दीस गाइस विल बी, क्योंकि वो व्हाइट बॉल पे भी तो फोकस करना पड़ेगा ना अभिषेक. और दिलीप ट्रॉफी पे किस बेसिस पे पिक करोगे? दिलीप ट्रॉफी पे मैच कितने खेले हैं जो दिलीप ट्रॉफी पे पिक करोगे? फिर तो वहां बायस आ जाएगा कि बड़ा नाम है तो रखना ही रखना है. दैट इज द केस. अभी ईशान किशन अगर परफॉर्म भी कर देता ना, ही वोंट बी अ रेगुलर इन द प्लेइंग 11 ऑफ योर T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज आप KL राहुल को लेके जाओगे. नहीं, एक और चीज है यहाँ पर. देखिए, श्रेयस अय्यर ने टेस्ट सीरीज से पहले रणजी ट्रॉफी के मैच खेले थे, जहां पर श्रेयस अय्यर ने स्टेटमेंट दिया था. हाँ, जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आई एम रेडी फॉर टेस्ट फॉर्मेट एंड आई प्लेड दिस गेम बिकॉज आई वांटेड टू बी इन ग्रूव फॉर द इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज. 8 ओवर खेल के 48 बॉल 48 खेल के. So he played a match, okay, and then he didn't perform well. I already mentioned the scores of the first 2 test matches and then he was dropped. What I'm trying to say is कि यहाँ पर ईशान किशन का केस इतना ज्यादा सामने इसलिए आया है बिकॉज लोगों के पास कुछ है नहीं बोलने को कि आपने इससे टेस्ट सीरीज से पहले नहीं, क्या खेला. वो प्रॉब्लम ये है कि वो प्रैक्टिस किसके साथ कर रहा है ना, वो इशू है. Exactly. दैट इज द इशू. आपने इससे पहले क्या खेला जो आपने कुछ नहीं खेला. एज आई ऑलरेडी मेंशन कि आपने वो एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेली थी. एंड व्हाट सौम्या सेड कि आप किसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे और क्या कर रहे थे. वेल, दैट्स द होल केस ऑफ ईशान किशन एंड लेट्स नॉट गो देयर व्हेन वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन अराउंड. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. आवेश खान आपके साथ टीम में थे. आवेश खान को आपने रिलीज करा, वो और उसको क्लैरिटी नहीं दिया आपने, ठीक है. वो प्रैक्टिस करने गया, उसका एक रणजी ट्रॉफी मैच भी छूट गया और वो इंडिया स्क्वाड में भी नहीं था. तो ये तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हर जगह है बॉस, हर जगह है. एट अ चैट विद वन ऑफ द MP प्लेयर्स कि भाई पाटीदार और आवेश प्रैक्टिस करने आए थे लेकिन आवेश मैच नहीं खेला क्योंकि उधर से था कि अभी रिलीज नहीं हुआ है.
पाटीदार वाज इन द स्क्वाड, आवेश वाजंट, लेकिन आवेश को कोई क्लैरिटी नहीं था। और उसका इस चक्कर में एक रणजी ट्रॉफी उसका मैच ही मिस हो गया, वो डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग विद द टीम। Well, that's a case and communication की बात तो हम नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे लाइव सेशंस में अक्सर इस पर बातचीत करते हैं and we land up with no perfect answers for this whole topic. But for now, as we started with Shreyas Iyer's topic, let me close this again with Iyer's topic only, that Shreyas Iyer will be seen in Ranji Trophy as he's set to play for Mumbai starting from March 2 against Tamil Nadu. और Shreyas Iyer ने अपनी availability सामने रखी है, तो उनको squad में लिया गया है. Would request our producer to once again flash the full squad of the Mumbai team that will play in the semi-final match against Tamil Nadu. That's Ranji Trophy 2023-24. You can see all the players in this list. Well, one thing is pretty clear, that Shreyas Iyer is not in Indian squad for the 5-match test series, where only one test match is left in Dharamshala. We'll see what the team will be in Dharamshala. I'm just wondering if Shreyas performs in this game, क्या फिफ्थ मैच में फिर स्क्वाड बदलेगा क्या एक दिन के अंदर? चलिए वो देखते हैं. It'll be quite interesting to see, but that's the latest update right now about Shreyas Iyer, and we also discussed about Washington Sundar in this live. For more such details and updates, you stay tuned to CricketNext. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।